Now, after discussing about the proof of Ohm's law, finally we will discuss the relation between the drift velocity Vd and resistivity rho as well as length of the conductor L, intensity of electric field E, current density J and potential difference V. What is the relation between them? So in the first line it is given here rho equals to E by J according to definition you know very well, and J is the current density. It can be written as the I by A, and I was also given as the I equals to NEAVD. So we can write here it will be E by NEVD. It is the relation between the resistivity of the material of the conductor as well as the drift velocity. And must to be note at that point, you know very well, when temperature increases, when temperature of the conductor increases, then Vd means drift velocity decreases, and Vd means drift velocity of the electron. They will more collide with each other and rho increases at that situation. Okay, so just keep in your mind because you will use it in numericals. And next line, Vd equals to E by Ne rho. Okay, it is just Vd is transferred here, and finally we can say Vd equals to capital V, which is potential difference, divided by Ne rho L, because E is known as the potential gradient V by L. So here you can say when length of the conductor increases, then drift velocity decreases. Okay, and now you know conductance and conductivity. What is the difference between them? It was discussed at the previous videos, but again I am just revising it. Conductance is the reverse of the resistance and conductivity is the reverse of the resistivity. Conductance is the reciprocal and its SI unit is mho, and conductivity is the reciprocal of resistivity and its SI unit is mho per meter. Okay, temperature, and finally we will discuss about the effect of temperature on the resistance. Suppose a particular conductor is just connected in a particular circuit, then after some time due to the flow of current it becomes hot, and due to the increase in temperature, what should be the effect upon the resistance of that particular conductor? So you can observe here R equals to ml upon Ne square tau into A. That particular formula was derived in a derivation of the Ohm's law, and in that particular condition, when temperature increases, the number of collisions increases due to the more internal energy of the free electrons, charge carriers, and relaxation time in that particular process decreases, and due to that particular situation resistance increases, because you know very well resistance is inversely proportional to the relaxation time, and that is the condition only for the conductors. Mean to say, if you are just increasing the temperature of the conductor, then its resistance will also be increases. Okay, and now temperature coefficient of the resistance. You was studying at the 11th standard, when a particular conductor is heated, then its length, its area and its volume must be increases. Linear coefficient, areal coefficient or superficial, as well as the volumetric coefficient of thermal expansion. You have studied at that point or not? So that particular formula is just written here because you know very well resistance is directly proportional to the length of the conductor. Therefore, here you can say what is the formula for the temperature coefficient of the resistance. It is given here alpha equals to RT minus R naught divided by R naught into T. It is this formula used at a particular point where R naught is the resistance at 0 degree centigrade and RT is the resistance of that particular conductor at T degree centigrade. Okay, so when we will increase the temperature from 0 to the T degree, then it must be written and must be used in numericals. And if there are two different temperatures are given, then you must be use that particular formula alpha equals to R2 minus R1 divided by R1T2 minus R2T1. Obviously you know very well in the same previous condition it is also temperature and resistance of the two different
values. Mean to say कि R1 क्या है, R1 is the resistance at the T1 temperature and R2 क्या है, R2 is the resistance of the conductor at T2 temperature. So it will be relation. Okay. And finally all these things are given here कि R0 आपका resistance at the 0 degree centigrade, RD is the resistance at the T degree centigrade, and R1 is the resistance at the T1 degree centigrade and R2 is the resistance at the T2 degree centigrade. Okay. So in the next slide we will discuss. In the next slide you can say last point we will discuss again here. If R2 is less than the R1, R2 means final resistance when we will increase the temperature, then you know very well with the help of that particular formula alpha, which is known as the temperature coefficient of resistance, will be negative. Okay. And now it is a very interesting, according to the numerical, and very interesting part of that particular chapter, which is known as the color code of the carbon resistor. Color resistance जो हम यूज करते हैं ना, बहुत स्मॉल साइज का होता है, एंड वी कांट राइट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कि ये कितने ओम का है, मिली ओम, मेगा ओम, मैंने बताया था ना. तो यू कांट राइट एट द सरफेस. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कोट कर देते हैं कलर्स के, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स की उस पर हम एक कोटिंग करते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर. तो हाउ इट विल बी, it will perform. So it is given in such a manner. I am just showing to you here. That particular condition is given like it is a resistance, it is shape of the resistance. Here number of the color strips are given. It is B, V, B and gold. Means first we will start from the left hand side, and first is the capital B, second is the violet B, and third is the blue, you can say third B, and fourth one color is gold. We will start from the left side. Okay. And now you can say the first two rings, first two strips, you can say ring or strips, first two rings from the end give the first two significant figure of the resistance in ohm. क्या मतलब है इसका, कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आप मेजर कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग के दो फिगर होंगे, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, सपोज दैट 12, तो 1 इज द फर्स्ट फिगर एंड 2 इज द सेकेंड फिगर. तो ये दो फिगर कौन इंडिकेट करता है, लेफ्ट साइड से जो आपने स्ट्रिप्स यहां पर मार्क की हुई हैं. ओके. एंड नाउ द थर्ड रिंग इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर. थर्ड रिंग का कलर क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लायर डेसिमल में कितना है. ओके. यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम. एंड फाइनली यू कैन से द लास्ट कलर, जिसको हमने यहाँ गोल्ड लिखा हुआ है, the last ring indicates the tolerance in percent about the indicated value. मतलब कितनी उसकी वैल्यू प्लस या माइनस में कम ज्यादा हो सकती है. यू कैन से what amount of the value of that particular resistance will be changed, okay, due to the use of that particular device. So here you know very well, for example, AB into 10 to the power C plus minus D% in ohm. मतलब you know very well, first two rings, first two strips will provide the two significant figure AB. Multiplier is just represented by the 10 to the power something, and plus minus means tolerance limit, and tolerance limit is the fourth strip color. Okay. How we will perform it? तो इसके लिए बहुत एक स्मार्ट सा फॉर्मूला है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना. तो इसको आपको मेमोराइज करना है, एंड जस्ट इंडिकेट द कलर फ्रॉम द lighter to darker to lighter region. Okay. Darker to lighter region, light color, dark से light color की तरफ, like that. Please see here, you know very well, in that particular table it is given as the BBROY Roy, G for Great Britain very good wife, like that. See here, you know very well, in that particular situation, first B stand for the black, second B stand for the brown, third R is red and O is orange, Y is yellow and G is green, and B is again blue, you can say it is sky blue, and V is violet, and G again is gray. Gray means just mixture of the white and black, you can say, and W is the white. Mean to say कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि from starting to the last you will move from the
डार्कर कलर टू द लाइटर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, है ना, ये सुनते रहे ना, उसी तरह से इसको समझ लो कि डार्क से लाइट कलर की तरफ आपको चलना है। एंड फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर में जो कलर होंगे ना, फर्स्ट टू स्टेप्स, वो इन्हीं से लिखे जाएंगे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। एंड जो थर्ड कलर है आपका, इट मस्ट बी द मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में अगर आपके ये कलर आते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू यू कैन मस्ट बी राइट। एंड फोर्थ वन कलर जो गोल्ड है, वो क्या क्या हो सकता है, वो फोर्थ वन कलर कैन बी अ गोल्ड, कैन बी अ सिल्वर, एंड मे बी इट इज नॉट गिवन, ओके, मीन टू से नो कलर विल बी गिवन इन दैट पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट, ओके, सॉरी फोर्थ पॉइंट। तो you must to be memorize it at that condition no color is given, then its tolerance limit is plus minus 5% for the gold, plus minus 10% for the silver, and plus minus 20% for the no color if no color is given. Suppose here that particular B is stand for the brown, okay, and V is stand for the violet, okay. तो ये आपका जो फिगर गिवन है, इनमें first two significant color will indicate to you 17 1 and 7, and third B is stand for the, suppose that black, okay. So it is given color, you know very well in that particular situation multiplier will be the black is stand for the 0, तो इसलिए 10 की पावर 0 आ गया। एंड फोर्थ वन इज यू नो वेरी वेल, इट इज गिवन एज द, क्या होता है, गोल्ड गिवन है, एंड गोल्ड इज स्टैंड फॉर द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द 5%। तो व्हाट अमाउंट वी विल राइट हियर, 17 10 to power 0 becomes 1, you know, so 17 plus minus 5%. Similarly, you can say another register is given here, which green, red, blue and silver strips are given. So just find the value of that particular resistance. I am betting here. Just write the value, quick, fast. Within 1 minute you can write, because in exam it must be asked for the 1 marks only. Okay. Yes, completed. Okay, so what is the green, you know very well, in that particular condition green and red will indicate the first two significant color. So green is stand for the 5, you know, so first 5, and second is the red is stand for the 2, so 5 into 2, 5 2 means 52, and third color blue is indicating for the, you know very well, blue is the 6, so 5 2 into 10 to the power 6 plus minus silver is indicating for the 10%. So what will be the result, 52 into 10 to the power 6 plus minus 10%. It is given here 52 into 10 power 6 plus minus 10% ohm is the resistance of that particular resistor. So I think you are now just understanding in more better manner, है ना, अब क्लियर हो रहा है ना। and that particular statement which I was just informing to you is written here, what is the value, third one condition is given, like that you can find easily कि ये आपका क्या है, 17 into 10 power 0, है ना, एंड प्लस माइनस 20%। वाई आई एम जस्ट राइटिंग एट 20%, बिकॉज देखिए यहाँ पर फोर्थ स्ट्रिप इज नॉट गिवन, ओके, तो फोर्थ कलर इज नो कलर, यू नो वेरी वेल, फोर्थ स्ट्रिप कलर इज नॉट गिवन हियर। तो नाउ यू कैन से इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन it must be written in such a manner, B.B. Roy of the Great Britain has very good wife. Clear? So now you can easily find the value of the resistance of a given carbon resistor, and it can also be find in the another way, है ना, जो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक दूसरे तरीके से भी कलर कोडिंग की जा सकती है। Another color code of the carbon resistor, सपोज अ कार्बन रजिस्टर इज गिवन इन दिस फॉर्मेट। अब इसमें उसमें डिफरेंस किया है, देखिए उसमें 4 स्टेप थी, देयर वाज 4 स्टेप्स, बट हियर होल ऑफ द रजिस्टर इज रेजिस्टेंस इज गिवन ऑफ द अ पर्टिकुलर कलर येलो, है ना, और उसके दोनों एंड आपके एंड इज जस्ट कलर्ड एज द रेड कलर, एंड डॉट अ पर्पल डॉट इज गिवन हियर, है ना, पर्पल और ब्लू यू कैन से, तो ब्लू कलर डॉट इज गिवन हियर, एंड स्ट्रिप इज आल्सो गिवन हियर, है ना, गोल्ड कलर की। तो you can indicate in such type of the color coding also, okay. तो you must be right here the color of the body, सबसे ज्यादा कलर कहां पर है, बॉडी पर, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन इंडिकेट करेगा, बॉडी। द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक, वहां भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड थर्ड वन कंडीशन द कलर ऑफ द डॉट, डॉट इज द इंडिकेटिंग मल्टीप्लायर 10 टू द पावर में जो हम लिखते थे, है ना, एंड लास्ट वन इज द कलर ऑफ द रिंग,
जो रिंग गिवन है, कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस लिमिट. It can be silver, it can be gold, but must be started from the gold, then silver, then no color. Gold is 5%, silver is 10% and no color is 20%. अब आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले गोल्ड आता है पहले सिल्वर आता है ना. तो सपोज एट ए पर्टिकुलर प्लेस अ गोल्ड कॉइन इज जस्ट, है ना, सिचुएटेड, जस्ट प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड एक सिल्वर कॉइन वहां पर पड़ा हुआ है. तो आप पहला कौन सा उठाएंगे, गोल्ड का सिक्का उठाएंगे या सिल्वर कॉइन उठाएंगे? गोल्ड उठाएंगे ना, सिंपल सी बात है ना. इन दैट सेम कंडीशन गोल्ड विल प्लेस्ड फर्स्ट. तो पहले 5%, 10%, 20% में गोल्ड पहले आएगा, फिर सिल्वर आएगा, फिर नो कलर आएगा. एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू नो वेरी वेल ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटेड हियर. ये आपका ये ब्लू डॉट है, आपका ये गोल्ड रिंग है, और यू नो वेरी वेल व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर इज. यू नो और नॉट, है ना. बॉडी कलर येलो, 4 स्टैंडिंग, है ना. उसी तरह से आगे आपका you know very well end color red stand for the 2 and you know very well blue stand for the 6, BB Roy grade Britain वाले से, है ना. In that particular condition it will be given as 10 power 6. And last one is the gold, ring is gold, it must be given, name of the color must be given in the question. तो आप इसको क्या लिखेंगे, plus minus 5%. okay, and finally you can say कि all these things are very easy to understand and it can ask in the question paper for the 1 marks. okay, अब लास्ट में हम क्या बात करते हैं, वही अगेन आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, वही क्लास 10th वाला, है ना. दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. So you can write here what is the series combination of the register. If number of the register are connected one by one, alternatively R1, then R1 to R2, R2 to R3, they are connected in series, है ना, वही क्लास 10th वाली बात. तो what should be the total resistance of that particular combination? It will be the linear sum of them, है ना. तो R जो होगा आपका, it will be R1 plus R2 plus R3, like that, you know. Net resistance will be sum of all. और जो net resistance इस combination का होगा, it must to be greater than the highest resistance connected in the circuit. जो सबसे ज्यादा resistance होगा, उससे भी ज्यादा resistance इस पूरे कॉम्बिनेशन का होगा ना, क्योंकि उसी वैल्यू पे आप लीनियरली सम कर रहे हैं. सपोज 1 is 10, अनदर इज 2 एंड थर्ड वन इज 0.5. तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इट मस्ट बी मोर देन द 10 ना. 10 plus 2 plus 0.5, तो 12.5 हुआ. आई वांट टू से, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन. अनदर इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू नो वेरी वेल, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर, एक के बाद एक, दे आर वन एंड इज कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट एंड अनदर end is connected with the another point. okay, in that particular condition potential must be same for the combination. अब पहले वाली कंडीशन में क्या सेम होता है, current will be same for all the resistors. okay, so in that particular condition potential applied must be same, so we will find the net current I equals to I1 plus I2 plus I3. याद आया ना, क्लास 10th में किया था आपने. in the same scenario you will write here कि what should be the net resistor of the combination, 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, and where net resistance which will be given here R, it must to be smaller than the smallest value of the resistor. ठीक है, तो सीरीज में हाईएस्ट टू द हायर रेजिस्टेंस एंड से पैरेलल में स्मॉलेस्ट टू द स्मॉलर रेजिस्टेंस. इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करेंगे. फिर वी विल परफॉर्म द न्यूमेरिकल्स एंड आई विल सॉल्व इट एंड आई विल इन्फॉर्म टू ऑल दीज थिंग. तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू आफ्टर सम टाइम, है ना. लेकिन ये सारी